Yes, students, we start with the last function of parliament, okay, that is law making. Okay, but before we start with the fourth function, let me take a quick revision of what we have studied in this chapter. Okay, see students, this chapter is titled as the need of parliament. Okay, so we are considering here the necessity of having a parliament in our country. Now you have got an idea, students, about what exactly parliament is. You know what is Lok Sabha, what is Rajya Sabha, who is president, what is his role, and who is vice president, and who is prime minister, what is his role. This is what I have taught to you till now, I mean explained to you till now. Okay, you have got some idea about the Lok Sabha, Rajya Sabha, the president, vice president, prime minister. Okay, you know that parliament, it is a congregation of elected representatives. You also know that who is electing these representatives, whose representatives they are elected by the people of India, the citizens of India who are above 18 years and above. Okay, so those who are the adults, they have got the universal adult franchise, that is right to vote, I told you, and then they choose a representative. Okay, and what do these representatives of the people do? They take decisions regarding what? Regarding the growth of the country, regarding the well-being of the people of the country. They are taking decisions on behalf of the people. Okay, so the people indirectly, they are controlling, they are guiding the government. Okay, so this we have already studied, parliament, we have studied how is the parliament formed, okay, or it consists of whom, okay, and the functions of parliament now we have been studying. Okay, in the functions of parliament, by studying all this, what we are doing, of course you are getting introduced to like who are the officials here and what are their roles, and who are the members here and what are their roles. Okay, and together what is the role of the parliament, okay, what are the functions, I mean. Through this, what we are trying to consider is that is it necessary, what is the need of parliament. Understood? Yes. So now focus on the functions of parliament properly. Like I have already taught explained three functions to you. What are those three functions that will help us to consider whether parliament is necessary or not? The first function is that the parliament, it controls it plays an important role in selecting the national government. You know now, like there is national government at the center, and it consists of the members of which parties. Okay, why I say parties? Because it is a government formed by a NDA, that is National Democratic Alliance. Okay, it is a coalition government. Okay, there are coalition government. Do you remember that? What happens? The president is inviting the majority party to form the government. Okay, so when elections were held in 2019, general elections, do you remember, last year, then the BJP, okay, and its allies like Shiromani Akali Dal and Republican Party of India and other parties, they won majority. Okay, the BJP and other parties, the NDA, they won at majority of the seats. Okay, so the president invited them, okay, and then the members of ruling party, they chose a prime minister, that is Narendra Modi. Okay, and Narendra Modi, he appointed the other ministers. Okay, he allocated portfolios to them, right? And there are three types of ministers that we have seen. One is the cabinet minister type of minister, then the minister of state and deputy ministers. Means in the cabinet, in the council of ministers, it consists of three categories of ministers. That also we have studied. Okay, so that was related to what? The parliament's role in selecting the national government. Okay, now the second function, what was that? Controlling and guiding and informing the government. What is the second function? Controlling, guiding. Now how students, parliament is controlling and guiding? You know that the members of parliament, they ask questions. Okay,
to the ministers. They ask questions relating to what? Relating to the operation of the respective department. Okay, that happens when during the question hour. Okay, and then there is the 0 hour also, when discussions are held over matters of public interest. Okay, so the members of parliament, what do? They obtain elicit information regarding the working of the government, and by asking questions, what they can do? They can alert the government to its what can be considered as shortcomings. Okay, or which can be shortcomings. Okay, and the shortcomings regarding what? Regarding the policy and programs of the government. Excuse me. So in this way, the parliament, it controls and guides the government. Okay, and it also informs the government about what? About the opinions of the people, because these representatives, they are the these members, they are representatives of the people. So whatever are the opinions of the people, they are expressed, okay, by these members who are the representatives of the people. Okay, so means this is the arrangement, right? And second one we have studied, the second function there. Now the third function is controlling on government finance, that we have studied, that the finance minister is presenting the budget. Okay, and what does the budget do? It explains what? The expenses, the intended expenses, कहाँ पर खर्चे गवर्नमेंट करने वाली है, and the probable returns. Okay, this is explained by the in the budget. Okay, and one more thing, the whatever new proposals are there for taxes. Okay, so proposals for new tax laws, they are tabled before the parliament. Tabled means they are presented for consideration or discussion before the parliament. So in this way, students, the parliament is controlling the finance. Okay, this is the third function of the parliament. Okay, now we move to the fourth function, students. Okay, and you can see here, as it is titled as law making. Now it is not new, this concept of what is a law and making of a law. Still I will give you one example कि जैसे कानून बनाना मतलब क्या होता है. एक कानून जो बनाया गया है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. सी जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए सरकार ने एक कानून बनाया था कि उनको बहुत पुअरली वेजेस उनको नहीं मिलने चाहिए, कम वेजेस नहीं मिलने चाहिए. हाँ, दे शुड गेट अप्रोप्रिएट वेजेस. सो सरकार ने एक कानून बनाया था और वो कानून का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है कि कैसे कानून बनाए जाते हैं टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ वर्कर्स, सो दैट द वर्कर्स शुड नॉट बी पुअरली पेड. हाँ, द गवर्नमेंट मेड अ लॉ विच इज़ कॉल्ड एज द मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, सो अभी हमको यही पढ़ना है कि कानून बनाना मतलब क्या होता है, मतलब ये पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है कानून बनाने में, और पार्लियामेंट कौन कौन से कानून बना सकती है कौन से सब्जेक्ट्स पर. ओके, सो हियर सी, first of all, constitution has provided for a threefold distribution of legislative powers between the central government and state government. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कानून बनाने का. राइट, सो इट प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट. 3 प्रकार की लिस्ट होती है. इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कानून बनाते हैं. कौन कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू कि ये 3 लिस्ट कौन कौन सी है. तुम यहाँ पर देख सकते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है. ओके, सो यूनियन लिस्ट मीन्स व्हाट? इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉज कैन बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है जिस पर कानून कौन बना सकता है, ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, हाँ. और एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड बाय बोथ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, examples, I think you might be thinking of examples. Okay, or what is concurrent list? Don't worry, we are going to come to that again in detail. I am just giving you introduction now. Okay, I am going to come to it and then I'll tell in detail also about it. Okay, पहले देखते हैं यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स है. यहाँ 97 लिखा हुआ है
97 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? यूनियन लिस्ट मतलब इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉज कैन बी मेड ओनली बाय द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ही, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का क्या अधिकार है। लॉ मेकिंग किसका पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट का, ठीक है ना। सो अपना फोकस ज़्यादा पार्लियामेंट पर रहेगा। ऑफ कोर्स स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी हम जानेंगे अभी। ओके, पहले पार्लियामेंट समझ लो कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन विच सब्जेक्ट्स। सी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on 97 subjects such as, which includes, I mean those 97 subjects include defense, foreign affairs, communication मतलब telephone, postal system, then banking or railways। So ये जो these laws they apply for all the people of the country। जो कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाती है they apply for all the people of the country and they make laws on 97 subjects and examples are defense of the country या foreign affairs or communication, banking, railways। okay, हाँ, now the state list includes which subjects? They include subjects like police। okay, now this can happen that different states can have different laws। अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। उदाहरण के लिए पुलिस ये सब्जेक्ट है या एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग कानून हो सकते हैं। खेती के संबंध में महाराष्ट्र का अलग कानून हो सकता है, हाँ, और बिहार की गवर्नमेंट का अलग कानून हो सकता है। ओके, समझ में आया? सो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड है जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे कि ट्रेड या कॉमर्स या इरिगेशन। ओके, हाँ, नाउ कमिंग टू कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट से मैंने पहले कहा कि जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर मान लो दोनों भी गवर्नमेंट कानून बना सकती है। हाँ, अगर उनका कानून इफ इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग, इफ द लॉज आर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स। अगर कानून कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होती है कानून के बीच में, मतलब अलग अलग ही बात बोल रहे हैं दोनों कानून। रिगार्डिंग एजुकेशन मान लो कोई फैसला ऐसा आया है और जिसमें एकदम जो निर्णय दिए हैं वो बहुत विचार कॉन्ट्रैक्टिंग ईच अदर है ना। सो इन दैट केस द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कॉन्ट्रैक्टरी है दोनों के कानून, सो उस कंडीशन में किसका कानून रहेगा? उस लॉ विल प्रिवेल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नाउ इसमें और दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, बात वही लागू होती है लेकिन रिगार्डिंग हुज लॉ विल प्रिवेल। इट कैन इंक्लूड अदर सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट, सक्सेशन, एडॉप्शन। सक्सेशन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सक्सेशन? सक्सेशन मीन्स द राइट टू इनहेरिट अ टाइटल। like for example it can be an action also of inheriting some property also। okay, like property of a father, right of a son to own the property of a father। okay, son I mean children included, daughter also included। so if I call that as right, okay, in certain conditions, so that is what is succession। or it can be related to laws related to industry, factory, laws related to labor। so such laws can be made by both the governments and they are included in which list? In the concurrent list। okay, now coming back to parliament, because I told you our focus is on parliament। so parliament कानून बनाता है कितने सब्जेक्ट्स पर? 97। ठीक है, now कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो ये तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं। सो उसके ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकता है। और वो सब्जेक्ट्स को कहा जाता है रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। क्या कहा जाता है? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। व्हाट आर रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दीज थ्री लिस्ट। ओके, सो सच सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स विच केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ये सब्जेक्ट आया। ओके, सो ऐसे सब्जेक्ट आर इंक्लूड इन द रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स और दे आर कॉल्ड एज रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स।
अंडरस्टूड। और उसके ऊपर भी कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कंडीशंस व्हेन दिस पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट तो मैंने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट बना ही सकता है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है ना। स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स है, ऑन दैट ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। कौन सी 3 परिस्थितियाँ है वो? वन इज नेशनल इमरजेंसी, सी वन इज नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स इट इज अ सिचुएशन विच इज threatening, dangerous, and which requires immediate action. So during situation of national emergency or breakdown of state machinery, or if it is a matter of national importance, okay, then the central government, parliament can make laws on subjects which are included in the state list, okay, and subjects which are included in the concurrent list also the central government can make laws. This I have already told you. Okay, one more thing regarding the law making power of the parliament, that the parliament it can amend the constitution. वो constitution में सुधारना भी कर सकता है। कोई कानून पहले से बना हुआ है वो it can amend that. For example, the Hindu Succession Act, और फिर बाद में amendment हुआ था, like इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द ईयर 1956 ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था, और 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बना है। लाइक व्हाट इन्फॉर्मेशन आई हैव रिगार्डिंग दिस इज़ कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें द फीमेल्स ऑल्सो गॉट इक्वल राइट्स, हाँ, एज मेल्स। सो दिस इज द अमेंडमेंट, ओके, इन द अर्लियर एक्ट, राइट। And the parliament it can amend, make amendment, okay, but if the in the laws, okay, in the constitution it can make an amendment, but if the matter is of concern to the state, if the matter concerns the state, okay, then it has to be endorsed, means supported, approved by the state also, okay. So पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन अगर वो मैटर जो है वो स्टेट से कंसर्न्ड है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब उस स्टेट से अगर कंसर्न्ड है, इट इज कंसर्निंग द स्टेट, देन वो इट हैज़ टू बी एंडोर्स्ड, मीन्स इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड, what that amendment, it has to be approved by the state also, state government also, then such amendment can be made. Okay, so this is all about the law making power of the parliament. Okay, now we move to the last topic of the lesson, that is people in the parliament. Here we will see that people from different backgrounds, now they are playing an important role in the functioning of the government. Okay, first we are told that now people from regional parties also, regional party like if BJP or Congress, Indian National Congress are national parties, I mean they are national parties. Shiv Sena is a regional party, okay. So there are other such regional parties like Shiv Sena, I gave one example. Excuse me. So they are playing an important role, they are playing an important role, like regional parties are playing an important role in the decision making process, okay, or influencing the government in the policies which are made by the government, okay. And people who were not earlier represented, now they are getting represented to the parliament, and the people from the underprivileged sections or the minority communities, they are also now coming out and actively taking part in the political, they are taking part in the political activities, okay. Now what is the meaning of underprivileged? Underprivileged means those people who do not enjoy the same standard of living or rights which are enjoyed by the majority of the people in the society. Underprivileged वो लोग होते हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा नहीं होता है, या जिनको वो अधिकार नहीं प्राप्त हुए होते हैं जो समाज के जो मेजॉरिटी में लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनको वो जो अधिकार मिले हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को वो नहीं होते हैं. दैट मीन्स दे
Such people, those who have not got the rights or standard of living, they are called as underprivileged. Okay. And one more section here, the scheduled caste and the scheduled tribes. See, the historically marginalized societies. Okay. So that the historically marginalized societies, they also should get adequate representation. Some seats are reserved. कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है पार्लियामेंट में, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. ये कौन सी कम्युनिटीज़ है? हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मार्जिनलाइज्ड मीन्स ट्रीटेड एज ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस. मार्जिनलाइज्ड मतलब वो लोग जो दोज हु आर ट्रीटेड एज ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस. So the people of such communities, they are given seats are reserved for them. Okay, for such communities or for such societies. Okay, seats are reserved. And for what the seats are reserved? So adequate seats are reserved for what? So that they get representation in the parliament. Okay. And lastly, similarly, regarding women also, there has been a debate that seats should be reserved for women. Where? In the parliament. See, women, they have 60 years ago they had 4% representation. Then they have 9% representation, but their population is 50%, almost 50% they constitute of the total population. Okay, so if we compare their population and the number of their presence in the parliament, there is so much of difference. Okay, so there has been a debate whether the seats should be reserved for women or not. Okay, so with this we come to the end of the chapter, students.